एक्शन एनसे भी क्या हो सकता है क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही हमने देखा कि अर्जुन रामपाल से भी पूछताछ की गई थी। Hello everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Iram remember me from Hamdard Public School, Ladakhi. Yeah, I don't remember your name, but I may remember you by your face. So I actually don't remember you by name, but yes, मैं face देखूंगा तो पहचान जाऊंगा. Anyways, I don't know how many of you were connected in the last class, which I started. We had a last class, I guess, on Thursday or Friday, whatever. So we have already done few things related to electrostatic, related to this chapter, which is electrostatic. We have done few things. I don't know how many of you were connected last time, but I would let you. I'll just remind you that we had dealt with Coulomb's law in vector form, I guess. The last thing that we discussed in the last class was Coulomb's law in vector form. Is it right? जो लोग लास्ट Yes, क्लास में sir. कनेक्टेड थे उनको याद होगा शायद. Yes, sir. Okay. Okay. I'll just give a recap. I'm not going to tell you everything because it will take enough time and we will not be able to proceed then. तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ कि मैंने आपसे बोला था कि if we have two charges like this, if we have two charges like this and this charge is q1 and this charge is q2, and if both are like charges, means either both of them are positive or both of them are negative, so in both the situations both the charges will repel each other, right? And what would be the direction of this force of repulsion? So I can say q1 will repel q2 this way, matlab repulsion ka force will be acting towards right on q2 due to q1. So we called this force as force on 2 due to 1, if you remember from the last class. Please don't write anything on the screen, please, it's a request. Similarly, q2 will repel q1. Q2 will repel q1. In which direction? Obviously towards left. And what would be the value of that force? So that force would be F12, that is force on 1 due to 2. Galaxy M20, please don't write anything on the screen, please. Okay, sir. Anyways, so F12 and F21, and this force that we calculated last time in vector form, I wrote it as, अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और बताया था कि if we have this as the position of 2 with respect to 1, I called it as the position of 2 with respect to 1 as R21, if you remember from the last class, and I called it this as the position of 1 with respect to 2, and I gave you the formula to find the force in vector form, and the formula was F21 was written as k q1 q2 divided by F21 means R21 mod ka cube multiplied by R21 ka unit vector. Sorry, R21 ka vector, which I wrote it as R2 minus of R1. ठीक है. Similarly, the force on 1 due to 2 was equal to kq1 q2 upon R12 mod ka cube into R1 minus of R2. This was the formula for the force on the two charges in vector form. Okay, this was the force in vector form. This we have already done in the last class. Now in today's class, what we are going to start is what we are going to deal with is the superposition principle. So write the name of the topic, superposition principle, and please everyone have to respond. ठीक है, मैं अगर कुछ पूछूंगा तो you have to respond. Superposition principle of obviously electrostatic force. Superposition principle. ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल.
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोई बता सकता है मुझे कि व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स? किसी ने पढ़ा है इसको पहले? एनीवन? जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहे, जिसको भी याद हो। प्रिया, सितान, ताशी, तबस्सुम, एनी वन ऑफ यू? Stanzin Korol? कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन? कुछ तो पढ़ा होगा। चलिए मैं बताता हूं। सर कूलम्स लॉ से आप एक टाइम में कितने चार्जेस का फोर्स निकालते हो? कूलम्स लॉ at a time gives you the force between how many charges? Two charges. ठीक है। अगर इफ यू हैव मोर देन टू चार्जेस देन व्हाट विल यू डू? फॉर एग्जांपल, दो ही चार्ज हो ये जरूरी तो नहीं है। If you have more than two charges, for example, let's say I have one charge here, another charge here, and the third charge here. ठीक है? If we have these charges Q1, Q2, Q3, these are three charges. So how will you find the force on any given charge in this case? मान लीजिए कि if you are supposed to find the force on this Q1, Q1 पे आप कैसे force find करोगे? तो अनडाउटेडली मुझे एक बात पता है सर, Q1 पे Q2 का भी फोर्स लगेगा and Q3 will also exert some force. Is it correct? सर हाँ ना बोलना पड़ेगा। सर Yes, sir. Q1 पे there will be force due to Q2 as well as due to Q3, है ना? मान लो फॉर इंस्टेंस अगर मैं सारे चार्जेस को लाइक चार्जेस मान लूं, लेट्स से मैं सारे को लाइक चार्जेस मान लूं, तो इस Q1 पे हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ टाइम? One force is due to Q2 and because Q2 and Q1 are like charges, so there will be a repulsion. ये ऐसे रिपल्शन होगा। Similarly, Q3 or Q1 is also like charges, so there will be repulsion. This means that there are two forces on Q1. Two forces. One because of two, है ना? That is force on one due to two, and this is the force on one due to three. So at a time I am having two forces on given charge Q1. मतलब Q1 पे दो forces लग रहे हैं बच्चों। Q1 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो फोर्सेस। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि what will be the net force on this Q1, what would be the net force on this Q1, तो आपको याद होगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हाउ विल यू टेक द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस? वेक्टोरियली। मान लो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो what would be the net force on this charge? F net would be equal to what? F net would be the vector sum of two forces, that is force on 1 due to 3 plus of force on 1 due to 2. Is it clear? मतलब इस पे एट ए टाइम दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का वेक्टर सम होगा। अच्छा, अगर ऐसा मान लो कि इफ देयर इज अ Q1 here and let's say there is a charge Q2, there is a charge Q3, there is a charge Q4, these are the charges around Q1, तो इस केस में Q2 Q1 को रिपेल करेगा। मान लो ये Q3 भी Q1 को रिपेल करेगा, तो हाउ मेनी फोर्सेस वुड बी ऑन Q1 एट वन टाइम? कितने फोर्सेस लग रहे हैं Q1 पे? ऑब्वियसली थ्री फोर्सेस। वन
है ना, one force is on Q1 due to 2, the another force is on Q1 due to 3 and the third force is on Q1 due to 4. तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पर, what would be the net force in this case now? So the net force would be the vector sum of all the forces, F12 plus of F13 plus of F14. These will be the forces acting, right? If you will take vector sum of all these forces, then you will get the net force or not? Tell me yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. What does this mean? This means that if you have more than one charge which is applying a force on a given charge, मतलब अगर एक charge के around बहुत से charges हैं, if you have many number of charges around a given charge, तो उस given charge पे जो net force होगा, that would be the vector sum of all other forces. Is it clear? And this is known as superposition principle. I am repeating this again. किसी भी गिवन चार्ज पे जो नेट फोर्स है, that would be the vector sum of all other forces, and this principle is called as superposition principle. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिमाइंड करा दिया है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, पहले एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके मुझे आंसर बताएंगे। तो मैं आपको पहले मेथड सिखाता हूं, हाउ टू फाइंड फोर्सेस इन दिस केस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप मान लो कि दिस इज 3 चार्जेस प्लेस्ड हियर, यहां पर 3 चार्जेस हैं, ठीक है सर। ये चार्ज मान लो Q है, दिस चार्ज इज 2Q, दिस चार्ज इज 3Q। लेट्स से ये लेंथ L, this length is also L, this length is also L. It is an equilateral triangle. Clear? Let me name these vertices as A, B and C. आपको बताना है find magnitude of net force on charge placed at A. किस पे फोर्स बताना है? कौन से चार्ज पे? Q पे बताना है, 2Q पे बताना है, 3Q पे बताना है। On which of the charge you have to find the net force? 3Q पे। तो अब listen to me carefully. The first step is कि 3Q पे कौन-कौन फोर्स लगा रहा है बेटा? How many forces can you see on 3Q? What are the forces? Two forces, Q and 2Q, है ना? अच्छा, Q is positive, 3Q is also positive, so there would be a repulsion like this. 2Q is positive, 3Q is also positive, undoubtedly there will be again a repulsion like this. Let me call this force as 1, this force as 2. तो पहला स्टेप तो यह है कि just see whether the force is repulsive or force is attractive. तो मैंने देख लिया कि both the forces which is acting on 3Q is repulsive. Clear? Now the second step, write this force using Coulomb's law. Second step क्या है? ये forces find करो using Coulomb's law. मतलब क्या कि F1 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ कैन आई राइट दिस एज Q into 3Q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? L, तो L स्क्वायर्ड। हाँ ना बोलना पड़ेगा। समझ आ गई बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, similarly what would be the force 2? Force 2 means the force between 2Q and 3Q. तो क्या लिखेंगे आप? K into 2Q into 3Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम इक्वल टू 6K स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये पहला स्टेप सबको समझ आ गया? ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी आर सपोज्ड टू फाइंड द नेट फोर्स। तो दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2 एंड देयर इज सम एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस। कौन बताएगा कि ये एंगल कितना है? व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बिटवीन F1 एंड F2? 90 degree. 60 degree. Cos theta. 60 degree. It's an equilateral triangle, right? So this is 60. So this will also be 60 because these are two vertically opposite angle. So this would be 60 degree. Is it clear to all? Why are you writing the angle? Because you have to add these two vectors. You have to add these two forces by vectorial method because force is a vector quantity. And what is the formula to add the two vectors vectorially? Class 11th में पढ़ाया गया है आपको। F1 squared plus F2 squared plus of twice of F1 F2 cos theta. याद आया? Now put all the values of forces and solve it. You will get the net result. So what are the forces?
तो इस फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो फोर्स था इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर्ड। तो ये कितना हो जाएगा 3kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, बिकॉज F1 की वैल्यू, तो हमें क्या करना है F1 का स्क्वायर, राइट। तो F1 का स्क्वायर मतलब जो F1 की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करो। सिमिलरली प्लस ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ 6kq square upon L square the whole square. I'm just putting the values of these forces, right? 2 multiplied by, again write F1 and F2. So F1 is 3kq square upon L square. F2 is what? 6kq square upon L square. And the angle between these two is how much? That is 60 degree. So cos 60 is how much? Do you know? It is 1 by 2. Can you see this? Whatever I have written on the screen, is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay, so just solve this to get the final answer for the force. So I am repeating the method again because I'll give you a question to solve. So I am repeating this method again. First check the direction of the forces and then find the forces by using Coulomb's law and then apply the vector formula to add those forces. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस देखना है, फिर उस फोर्सेस को यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग द कूलम्स लॉ, और उसके बाद वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स यूजिंग द कूलम्स लॉ, उसके बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द वेक्टर फॉर्मूला टू ऐड द फोर्सेस टू गेट द नेट वैल्यू ऑफ फोर्स। क्लियर? तो इसको नोट करो so that I can give you the another question which you will solve, which you will try for. इसको नोट करो, I am waiting for a minute. हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Will you be able to simplify this? I am not simplifying, I am leaving this result here. Will you be able to simplify this result? Iram? Iram, Yes, sir. will you be able to simplify this result? Yes, sir. Good. So you can simplify. So I am leaving this result here. I am giving you another question which you will attempt for. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर है ना, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आप कितना समझे हो। आई एम टेकिंग अ सिमिलर क्वेश्चन विद जस्ट वन वेरिएशन, कि सर मैं ये ले रहा हूं कि ये एल 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 सब कुछ एल, यहां पर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज। लेट मी टेक दिस चार्ज एज समथिंग क्यू, दिस चार्ज एज 2q minus 2q and this charge is something 4q। ठीक है, आपको करना क्या है, you have to find the force, find magnitude of F net on 4q। ये 4q, इस पे निकालना है आपको फोर्स, ठीक है। तो आपको 4q पे फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ अदर टू चार्जेस, वन इज -2q एंड अनदर वन इज q। तो आपको इन दोनों के कारण इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं टू सॉल्व दिस एंड एवरीवन is requested to solve this question and send me your answer on chat। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, आप जो भी आंसर देंगे वो चैट पे देंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि कितने लोग सही कर पाए, कितने लोगों से गलती हुई है। तो टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हरी अप।
Okay. Can I ask you the answer now? Stanzin Angmo. Stanzin Angmo. Tashi. Tashi. Tashi Angmo. Tashi. Can you hear me? Can you please unmute your mic? Tashi. Stanzin Angmo, can you hear me? Can you please respond? Please unmute your mic. Hello. Yes. Yes, sir. Yes, beta. Did you solve this question, or could you solve this question? Yes, sir. I have a confusion on this theta. Okay, no issue. I'll tell you. I'll tell you what would be the value of theta. But what was your approach? How did you start? Um, What was I the first thing you firstly I did? Mhm. F1's value and F2's. F1 means, let's say, did you consider the force on 4q due to minus 2q to be F1? Which force you considered as F1? Yes, Minus 2q yes, और sir. 4q के बीच का, है ना? So can Yes, you tell sir. me Yes, sir. this 4q will be attracted by minus 2q or it will be repelled by minus 2q? Repelled. No, see, this charge is negative, right? Yes, And this sir. charge is positive. Clear? Oh, attracted. Sorry, attracted. है ना? So it would be obviously the force of attraction, right? So 4q Yes, would be sir. attracted like this, है ना? 4q can be attracted like this by minus 2q. This is the force Yes, F1. sir. Okay? ठीक है. And what about this force between q and 4q? What about this Repelled. force? Obviously, this would be the force of repulsion. So these are your two forces. And see, how will you find the angle? Just understand. It's an equilateral triangle. So every angle is of 60 degree. Is it clear? Stands in? Yes, sir. Yes, Every sir. angle is 60. है ना? Okay, what is the total angle of a straight line? So it is 180 degree. 180. 180, right? This you can see the green line that I'm drawing here is a straight line, right? If it Yes, is a sir. straight line, so this whole angle should be equal to 180. But this angle is already 60. So what would be this remaining angle? What would be this? This would be 180 120. minus 60. Yes. So this will be equal to 190. 120 degree. Good. Okay. Yes. Now, okay, I have got a answer from someone, but beta, you haven't simplified this result. It stands in coral. You haven't simplified this result. So in exam, you cannot leave this result here. In exams, you will have to simplify this, right? You can give the answer after simplifying this. So in exam, you cannot leave the result without simplification. Clear? Yes, sir. Okay. Okay. So moving on. What should I do now? What is the next step that I should do? What would be my next step? Who will tell me? Net to find the Yes. forces. Find the F net. No, find the F net, but before that, we need to find To F1 find and the we need to forces. find F2. No. है ना? We need to Yes, find the sir. values of these forces, right? And Yes. how we will Yes, find the sir. value of these two forces? So we will find the By value of these Coulomb's two law. forces. Very good. By Coulomb's law. So F1 would be written as K into 2Q into 4Q divided by the distance. Distance ka square. A square of this distance, and which is L. Is it clear? Yes, sir. Is there anyone who didn't get this point? Acha, why didn't you take this negative sign into consideration while writing this force? Why you not considering this negative sign?
Because you are just writing the magnitude of the force. What are you writing is magnitude of the force, है ना? तो whenever you just write the magnitude of the force without considering the direction of force, so what you do, you always take the magnitude of charge. What does it mean? कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना. We will just put the value. We will not consider the negative sign. Is it clear? So it would be written as 8kq square upon L squared. ठीक है? ठीक है? Okay, Stanzin Lamo. Yes, sir. Stanzin Lamo, can you unmute your mic? Stanzin Lamo, can you hear me? Yes, sir. Okay, can you tell me what would be the value of force between 4q? This is 4q. This is 4q. What would be the value of force between 4q and q? What would be the force? How will you write? Can you please dictate? Yes, Beta, sir. what Can will you be the please force? repeat? Yes, I'm repeating this again. I want to find out the force. I want to apply the Coulomb's law for these two charges, q and 4q. So what should I write? Tell me, hurry up. How will you apply Coulomb's law? Stanzin Lamo. बोलो. नहीं बोलना. Sir, 4kq square upon L square आएगा. And where did you left that k? अच्छा, you took that k. Okay, kq 4q upon L squared is equal to 4kq square upon L square. So ultimately, how many forces do we have here? We have two forces, right? On 4q, we have two forces. One is this force F2 and another one is this force, which is F1, and the angle between them is 120 degrees. Is it clear? 120. So what will be the formula to get the net force? The formula to get the net force will be F1 square plus of F2 square plus of twice of F1 F2 cos 120 degrees. Is it clear? Yes, sir. यही तो formula है ना? This is the formula to add the two vectors, right? So if you will add these two vectors using this formula, so just put the values of F1, F2 and cos everything. So if you put the value of F1, it is 8kq squared upon L squared the whole square plus of F2 squared, that is 4kq square upon L square the whole square plus of twice of this whole value 8kq square upon L square multiplied by what is the another force? 4kq square upon L square. ठीक है? What is the value of cos 120? minus half. -1/2. Very good. -1/2. Minus. है ना? तो this is just the continuation of this step. तो ये -1/2 is in product of this whole value. ये -1/2 उसके product में ही है. तो 2 and 2 will get cancelled out. ठीक है? Means the whole result, how can you write the whole result as? The whole result, you can write this as, I will write two steps now. You can write this whole result as 8kq square upon L square the whole square plus of 4kq square upon L square the whole square. This minus sign when multiplied by this plus sign will become minus here. And you can write this as 8kq square upon L square into 4kq square upon L square. Is it clear to all? Yes, sir. Note it down. Note this. Hurry up. Note till here. Everyone is supposed to respond, please. If you don't get anything, please ask me. Okay, sir. Hurry up.
Note till here so that I can proceed with the simplification. नोट कर लिया? Yes, sir. Okay, I'm erasing this left part to solve this further. I'm erasing this left part. I'm just trying to make you understand how this will be simplified. Okay, so let us understand the simplification of this. Everyone, please concentrate here. Tell me one thing. What can I do from this? Can I write this whole net force like this? 8 kq square. I'm writing few steps just for you to understand. 8 kq square the whole squared, 4 kq square the whole squared. ठीक है? Minus of, बेटा यहाँ देखो. Can I write this as 32 kq upon L? This will be k into k. K square, q square into q square. It will become q to the power 4. L square into L square will become L to the power 4. Is it correct? Yes, sir. Sir, see, 8 into 4 became 32, right? K will be multiplied by this k. So it will become k square. Q square will be multiplied with by this q square. It will become q to the power 4. L square will be multiplied by L square. It will also become L to the power 4. So can I write this as kq square the whole square? Tell me yes or no. Yes. Yes, sir. Okay, if I have done till here, so can you tell me one thing? Can I take this kq square the whole square as a common from all these? See, here you also have kq square upon L square the whole square, kq square upon L square the whole square, kq square upon L square the whole square. Can you take this kq square upon L square the whole square as a common from all these three? Yes. Yes, Is sir. it understood or not? Yes. Okay. Yes, sir. Okay, good. So what we will be left with? You will be left with 64 here because 8 squared will be 64 plus of 4 squared is 16 minus of 32. Right? If you solve Yes, this you will get as how much will you get? This 64 minus of 32 will become 32 and 32 plus of 16 will become 48. Right? 48. So this will become equal to kq square upon L square whole square into 48. Can you write this result finally also as kq square upon L square? If you take the square root, अच्छा मुझे एक बात बताओ, if you take the square root of a squared quantity, what will you get? First tell me this. What will be the square root of a square? अगर आप squared quantity का square root ले लो तो क्या मिलेगा? Obviously you will get a. Yes. A मिलेगा, right? So similarly, this is kq square upon L square the whole square, right? So if you take the square root of this, don't you think you will get this as kq square upon L square only under root of 48? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, tell me if you haven't understood anything. Please ask me. If there is any doubt you are having, you can please clear your doubt. Setan dolma, tabassum, jigmet. मैंने जो अभी नाम लिए हैं उनको आवाज गई मेरी? तबस्सुम. Yes. Yes, sir. Everyone has understood this till the last step, or anyone is having any sort of doubt? Stanzim No, disket. सबको clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If I give you another problem of same category, will you be able to solve?
Yes, sir. Okay, so I'll try with another question again, but of same variety. So please hurry up, note it completely, then I'll give you another question. Hurry up. Be quick. Then can I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm erasing this. I'm giving you one more question. Please hurry up. I'm erasing everything on the screen. I'm giving you one more question, which you will attempt for first. First, you have to try, then I'll give you the answer. Okay, just see. I am taking three charges again. Again, I am taking this as a right angle triangle. Let this charge be equal to 2q. Let this charge be equal to 3q, and this charge is equal to minus 4q. Let's say this charge is minus 4q. You have to find the net force. Force F net is equal to what? On which of the charge? On let's say minus 4q. On minus 4q. Hurry up. Everyone has to solve this problem. Okay, everyone is supposed to solve this problem. So please start solving this. It's a right angle triangle, and I have placed three charges on the three vertex of this right angle triangle, and I'm giving you the length of this. This is L. Let's say this is also L. Obviously, this third side would be equal to something root 2L. This is a right angle triangle having these angles as 45° each. This is a 90° angle here. You just have to find the force on minus 4q. That's it. Hurry up. The method that I have already told, or we have already discussed, use that method to solve this problem. These are three steps that you have to apply. First, check the direction. Second, find the forces using the Coulomb's law, and then apply the formula of vector addition. Hurry up, apply these three equations, these three steps to solve this problem. Okay, I have got one answer, but I want other answers from others also. So hurry up with this so that we can proceed.
Okay. Rest, please hurry up. I've got answer from two of the students. Please, you also back up. Anyways, I have got answers from five of the students. Three of them have got this answer negative. मतलब the value of the force they have got with a negative sign. First of all, try to understand one thing, because I'm talking about the magnitude of force. As I'm talking about magnitude can never become negative, right? Magnitude means it will always have a positive value. Magnitude का मतलब यही होता है. मतलब अब magnitude में negative sign क्यों आएगा? हाँ, if this force would have been calculated in its vector form, अगर आप उसमें magnitude find नहीं करते, then you may have this force positive or negative, and there has a meaning. If you are getting a force positive means its direction is positive, and if you are getting a force negative means its direction is negative. Then there was the meaning of negative or positive sign. But if you are calculating only the magnitude, I don't think magnitude can be negative, right? Magnitude can never be negative. Magnitude means the positive value. That's it. Okay. Okay, so I have got few answers. So let me solve this problem. Then we'll check whose answer is correct or whose is wrong. देखो सबसे पहला point. First of all, I have to find the force on this minus 4q. So 3q will be attracting this minus 4q. And this 2q will also be attracting this minus 4q. Why? The reason is very obvious. But if I am calling this force as F1, this force as F2, so both of these forces would be attractive. Why? Because this charge is negative, this charge is positive, and this charge is also positive. So both of these forces are attractive. So what is the second step? You will find these forces. What will be the value of this F1? Try to understand. K multiplied by 2Q. Although this charge is negative, but I will not use the negative sign. I will only use the magnitude of this charge. Means I will just drop this negative sign. Why? Because you are writing the magnitude of force. Whenever you write Coulomb's law in a scalar form, or in other words, whenever you write force or the magnitude of force only, you are not supposed to take the negative sign. You will just take the magnitude without considering the negative sign. Is it clear? So this will become equal to 8kq squared upon L squared. Similarly, what is the value of F2? F2 will be equal to K multiplied by 3Q multiplied by 4Q again
divided by L square. I don't know. 3 into 4 is 12 into KQ squared divided by L squared. Is it clear to everyone? Please tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we have these two forces. These two forces, one is acting in this direction, the another one is in this direction, and the angle between them is 90 90 degree, degree. right? So what will be the 90 net degree. force? Okay. So now there comes the third step, which is the vector addition of these two forces, which you will write it as F1 squared, F2 squared plus of twice of F1, F2 cos of 90 degree. And because cos 90 is 0, this 0. whole Yes, term sir. will become equal to 0 here. 0. So you will Yes, sir. only be having these two Yes, sir. values. Okay, F net would only be equal to F1 squared plus of F2 F2 squared. square. Okay, so F net would be equal to 8 KQ square upon L square, the whole square, plus Yes. of 12 KQ square upon L square, the whole square, right? Yes, sir. So what you will write this further? See, KQ square upon L square, the whole square, KQ square upon L square, the whole square, I can take them as common. This will become KQ square upon L square, the whole squared. And what you will be left with? This will be 8 squared, which you will get from here. This will be 64 written as plus 64 plus of this 12 144. squared, which is 144. Very good. 44. Yes, sir. ठीक है. अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है, तो आई लाइक द लास्ट स्टेप ऑफ दिस, बट जिसने नोट नहीं किया था वो नोट कर ले, और जिससे कुछ यहाँ तक मिस्टेक हुई हो तो देख लो. तो मैं इसका लास्ट फाइनल स्टेप लिखूंगा, पहले यहाँ तक नोट कर लो. नोट कर लिया? कैन आई इरेज लेफ्ट पार्ट of this Yes, solution? sir. Okay, I'm erasing this part, right? I'm erasing this part to write the final result. Okay, if you'll add 144 with 64, what will you get? Don't you think it will be 208? 8. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो what is the value? F net is equal. अच्छा देखो यहाँ पर KQ square upon L square, the whole square का square root है. तो आपको मैंने क्या बोला है कि whenever you have square root of a squared quantity, Will so come out, sir. the square root of a squared quantity will be simply written as only that quantity, है ना? मतलब square root से square will get cancelled. ठीक है? इसका मतलब can I write this final result as KQ square upon L square, right? Yes, This sir. square will get cancelled by this square root, multiplied by what you will get inside the square root. You will get this as under root 208. 208. For me, है ना, for me this is the answer, because I 208 is not a perfect square, so I'm not solving it, but this is your net force, and I think Yes, sir. most of you haven't got this net force. I मैं got it, बताता sir. हूँ. Okay, I don't know if you have got. Okay, who got this? Iram. Me, sir. तो Vangmo, sir. Angmo, Vangmo, Sonam Vangmo. Sonam. Where is Sonam? Sonam, I Vangmo, cannot sir. find your name. It's written Vangmo Anyways, only. I guess. it's written Wangmo. You got 4QL root 13. No, sir. Okay, I don't know, but most of you got this answer as 20 KQ square by L square. Can you tell me how did you get this answer? Saturn, Dolma, Jigmet, Teskit, Stanzin, Corol. I may be wrong with the pronunciation of your name, but please उसको manage कर लीजिएगा. Anyways, लेकिन मुझे बाकी लोग ये बताएं कि those who have sent me this answer, some of you have sent this answer as minus 20 Q square upon L square. How did you get this? What did you do? सर वो 8 और 12 को स्क्वायर करना भूल गई थी थोड़ा जल्दी में.
हाँ नहीं तो जल्दी में ये भूलना नहीं है, अदरवाइज एवरीथिंग विल बिकम रॉन्ग, राइट? तो थोड़ा सा जल्दी तो करनी है, बट यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ द कैलकुलेशन पार्ट, राइट? अच्छा, इसलिए आप लोगों का ये गलत हुआ है। Anyways, Yes, sir. so now do you have idea how to find the force on a given charge due to other charges if there are more than one charge which is exerting a force on a given charge? So now do you have idea how to find the force? Yes, sir. मान लो अगर कोई एक चार्ज है और उसके अराउंड इफ वी हैव more than one charge placed, so how we will find the force on this given charge due to other charges? Now do you have idea? What you are supposed to do, you Yes, have sir. to keep the 3 steps in your mind. First, check the direction of the forces. Second, find the forces due to by using Coulomb's law, and then finally apply. Then finally apply what? Then finally apply the vector formula to add those forces. I am taking one more question ताकि आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाए. Then I will move to the next variety of question or next topic. एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से, एकदम hurry up. This question is given in your NCERT as an example problem. So I am discussing this question with you. So be quick. Just try to understand. I'll solve this for you. You just have to understand this. See, there are 3 charges placed on the vertex of equilateral triangle, and there is one charge Q placed at the centroid. Do you understand centroid of the triangle? This Q is Yes, placed sir. at centroid. Yes, ठीक है, sir. Q is at centroid. Q is at centroid of this equilateral triangle. ठीक है, तो what is asked is find magnitude of F net on Q due to other 3 charges. Due to other 3 charges. Obviously, on this Q, which is placed at the centroid, how many charges would be exerting force? So there are 3 charges, this one, and this one. Okay, who will tell me the steps? What will be the first step that I should write here? What is the first step? Tabassum, can you tell me? Wangmo's iPhone. Who is this Wangmo iPhone? Yes, sir. Yes, beta. Can you please help me with this? Can you please tell me what is the first step that I should do? So first we'll find the distance, exact distance between the charges and the centroid, sir. Okay, chalo. So what would be the distance between the charges and the centroid? Means you have to find the distance between the vertex and the centroid. This is what Yes, sir. she is saying, right? So what is this Yes, sir. distance? These type of things are taught in class 8th or 9th, but if you don't remember, I'll tell you how to find this distance. If you forget this, I'll tell you how to find this distance between the vertex and centroid. See, if this whole length is L, try to understand. If I drop a perpendicular on this, don't you think this will become L by 2? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes. Okay. Because it is an equilateral triangle, the whole angle would be 60 degree. Yes. This line from here till here, this divides the whole angle into 2 equal parts, means this angle would become equal to 30. 30 degree. Good. So if this angle is 30 and you know this length is L by 2, you know the base, you know the value of the base, and this is the hypotenuse of this triangle. Don't you Yes, think sir. so? I'm talking Yes, about this sir. triangle. Everyone please respond. Yes, sir. Yes, sir. Good. We have to find this hypotenuse. We know the value of base. Can I write cos of 30 is equal to base upon hypotenuse? Cos 30 is Yes, how much? sir. It is root 3 by 2 is equal to L upon 2, okay, into H in the denominator. I have to find this H, right? This 2 and this 2 get cancelled out. So don't you think H will become equal to L by root 3? Yes, sir. Yes, sir. Now you have to remember this result. The distance between the vertex and the centroid of an equilateral triangle is always L by root 3. I'm repeating this Yes. again. You have to remember this result. The distance between the vertex and the centroid for the equilateral triangle is always L by root 3. Okay, so now I have got the distance, right? Okay, I'll ask someone else now.
Okay, I have got the distance. So what should I do now? Stanzin Angmo. What should I do the next? Stanzin Angmo, can you tell me what we should do next to solve this problem? Yes, Bolo? sir. We have to find the charge. No, charge is already given, na beta. We are not supposed to find the charge. We are supposed to find the force, बच्चे. Yes, Charge sir. तो हमें Force, given है force. ना, force, है ना? Okay, but before that, I would like to tell you that this charge, which is Q, this will repel this capital Q like this. Is it clear? I'm calling this force as F1. Similarly, this charge will also repel this Q like this. This force will be called as F2. And the last one, this charge will also repel this Q in this direction, and this will be called as F3. Is it clear? Yes. Are you convinced with the direction that I have shown you? Okay. Okay. So we now know the direction of these three forces. Now, remember here, three forces are acting, not only two forces, but three forces. So you need to add three vectors that I'll deal with. But before that, we need to find these values. F1. What will be the value of F1? What is the F1? F1 is the force between this Q and this Q. So will you write this as K into Q into capital Q upon L by root 3, the whole square? Is it clear? Please respond. Yes, sir. Sir. Okay, so can you write this as K Q Q upon L square upon 3? Because root 3 का square करोगे तो root खत्म हो जाएगा. So you will get this as 3. Means you will get this as 3 Q Q upon L squared. Is it correct, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Acha beta, without solving, can you tell me what would be the value of F2 and F3? Same. F2, which same, of course, Yes, same. sir. Because see, for F2, you will again take these two charges and the distance will again be L by root 3, Same. right? Yes, sir. And for F3 also, these are two charges and distance is L by root 3. Means F1 is equal to F2 is equal to F3 and all of them is equal to this force. Understood? Yes, Yes, sir. Okay. So now we are supposed to add three forces which are equal in magnitudes. Means if I'm calling this F1 is equal to F2 is equal to F3, all of them I'm calling as F because all of them are equal in magnitude. So these are three forces that we are supposed to add. So please note down this step so that I can solve this problem further. I can tell you how will you add these forces. So first, please note till here so that we can proceed with the solution part. सर हो गया. हो गया, बहुत बढ़िया. अब देखिए यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं तो कंफ्यूज नहीं हो. मुझे एक बात बताओ, मैं एक बच्चों वाली बात पूछूं? सर तुम कौन से बहुत बड़े हो गए हो, चलो एक बच्चों वाली बात पूछते हैं. सर मुझे एक बात बताओ. सर आप बताओ सर. सर मुझे एक बात बताओ सर, 2 + 4 सिंपली 6 लिखते हो ना? बच्चों वाली बात. Yes. मैंने पहले ही बोला बच्चों वाली बात कर रहा हूँ. अच्छा अगर मैं मान लो फिर आगे लिख दूं 8, आगे 8 लिख दिया, हाउ विल यू ऐड दीस थ्री नंबर्स? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? हाउ टू ऐड दीस थ्री नंबर्स? मैं बच्चों वाला प्रोसेस पूछ रहा हूँ, कैसे ऐड करोगे? क्या आप ये नहीं करते कि 2 और 4 को ऐड कर लूं? Yes, sir. इसका जो सम आएगा उसको मैं इसके साथ ऐड कर लूं? Yes, sir. नहीं आया, नहीं समझे, नहीं समझ आया, नहीं आया. इसका मतलब अगर सर ऐसे होता सर 2 + 4 + 8 + 6 + 4 तो क्या करते? 2 ऐड करा, इसका सम तीसरे के साथ, फिर इसका जो सम आता फिर उसको आगे ऐड कर देते, फिर इसका जो सम आता उसको आगे ऐड कर देते. तो यही तो करते थे. द सेम लॉजिक वी विल अप्लाई फॉर द वेक्टर्स ऑल्सो. मेरी बात ध्यान से सुने बच्चे. द सेम लॉजिक वी विल अप्लाई फॉर वेक्टर्स ऑल्सो. क्या मतलब हुआ? सर किसी भी दो को ऐड करो, उसका जो सम आए
उसको किसके साथ ऐड करो? थर्ड वाले के साथ। ठीक नहीं है आ रहा भाई, कैसे बताएं? अरे सबको समझ आ आ गया? गया सर, आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक और बात मैं पूछूंगा सर, एक और बात, एक और चीज बता दो, फिर सम करते हैं। ये सेंट्रॉइड का ये पॉइंट था, एक फोर्स ऐसे इस लाइन पे, एक फोर्स ऐसे, ये मुझे बता सकते हो किसी भी दो फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? कोई भी बता दे, एनी वन 120. ऑफ यू। वेरी गुड, 120. वेरी गुड। दिस वुड बी 120, this would be 120, every of this will be 120, इसका मतलब 120. this angle is 120। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं इस वाले को इसके साथ ऐड कर रहा हूँ बाय अब यूजिंग द वेक्टर फॉर्मूला। तो मैं इन दोनों का सम ले रहा हूँ, है ना? क्लियर है? तो पहला एफ नेट निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो क्या लिखोगे आप? f squared plus of f squared plus of twice of f1 is also f, f2 is also f into cos 120। सर नहीं आया सर, सर मजा नहीं आ रहा सर, मजा नहीं हाँ आ रहा। ये सर समझ। बहुत बढ़िया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2f स्क्वायर इंटू कॉस 120 माइनस 1/2। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, तो f net is equal to what? This will be written as f square plus of f square minus of f square। सर गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? एफ स्क्वायर ने एफ स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो क्या मिलेगा मुझे? तो यहां से मुझे मिला इन दोनों का सम कितना है मेरे बच्चों? इन दोनों का एफ नेट की वैल्यू एफ आई। सर सबको आया? सर सबको आया? यस सर। पक्की बात? अरे वाह, बहुत मजा भाई, बहुत मजेदार। तो अब क्या करें हम? इन दोनों को हटा दें और एक फोर्स हम लगाते हैं ऐसे, एफ। सर आपको कैसे पता कि ये ऐसे ही आएगा? तो अगर आपने 11th में थोड़ा सा वेक्टर अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होता या पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो बिल्कुल ऐसे आएगा। पैरेललोग्राम लॉ सुना होगा कभी? सुना है? यस सर। भाई अगर दो वेक्टर हो और ऐसे टेल कोइंसाइड कर रहे हो, तो इसका जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम बना लो, तो जो डायगोनल होगा वो रिजल्ट बताता है ना। तो ये मेथड होता है ना। तो रिजल्टेंट अगर निकालोगे ना बेटा, तो मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि भाई ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। और ये जो एक और फोर्स कौन सा रह गया था बेटा? नीचे वाला रह गया था क्या? हाँ सर, ओ सर। अब मुझे बताओ तो, अब इसका पूरे का सम क्या लिखूंगा? एफ नेट डैश। अब इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, मुझे कौन बताएगा? एक फोर्स ऊपर है उसकी वैल्यू भी एफ है, एक फोर्स नीचे उसकी वैल्यू भी एफ है। अच्छा मैं ऐसे पूछ लेता हूं, मान लो मैं कह रहा हूं कि इस ब्लॉक पे मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन, वेरी गुड इरम, और इधर इस पे फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन, व्हाट वुड बी द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? 0. जीरो। सिमिलरली सर ये देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये ऊपर आया, which is coming out to be f, और थर्ड फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड विच इज ऑल्सो f। तो दो फोर्सेस हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, तो नेट फोर्स कितना आया? 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। नहीं समझे? समझ डन? गए सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत इंटेलिजेंट है भाई आप तो। So now you have an idea how to deal with these kind of questions, right? अच्छा मैं इसका ना ये सम मैं एक और मेथड से निकाल सकता हूं, अगर मुझे आप अलाउ करो, तो आई विल टेल यू दैट मेथड आल्सो व्हिच विल मेक योर क्वेश्चंस इजियर इवन। तो अगर आप मुझे कहो तो मैं ये जो सिर्फ सम वाला पार्ट है, द एडिशन पार्ट, जो मैंने ये अभी इस मेथड से करा है, वी आल्सो हैव अनदर मेथड टू सॉल्व दिस। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट मेथड? Because in few situations that method will become easier for you to solve। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इसी का एक और मेथड बता रहा हूं। आप मुझे पहले ये बताओ, हैव यू हर्ड अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? हैव यू हर्ड अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? यस सर। ओनली एक बच्चे ने रिस्पॉन्ड करा, ओनली वन स्टूडेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू दिस, बाकी लोग भूल गए। मैंने लास्ट क्लास में भी आई टोल्ड यू अबाउट द रिजोल्यूशन, इफ यू कैन रिकलेक्ट। This is F, this is F, and there is another force which is F। ये अच्छा, आपने कभी पढ़ा है कि अगर ये फोर्स हो, ये कोई वेक्टर हो और ये एंगल थीटा हो, तो
तो इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं. दिस विल बी कॉल्ड एज a cos थीटा, दिस विल बी कॉल्ड एज a sin थीटा. Yes, sir. नहीं पढ़ा ना? पर Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा है सर, पढ़ा है सर. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रे भाई. आर भाई और भाई. अब देखो, द एंगल बिटवीन दीज टू इज 120. और ये जो लाइन है, don't you think this line is dividing the two angles in equal halves? That is, it is 60 and this is 60. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, इस फोर्स को, ये देखो, ये फोर्स है, ये एंगल है 60. इस फोर्स के मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं. आई कैन टेक द टू कंपोनेंट्स, राइट. एंगल इज विथ वाई एक्सिस, तो वाई पे जो कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी f cos 60, और जिसके साथ एंगल नहीं है उस पे जो कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी f sin 60. सर कोई दिक्कत सर, कोई इशू? सर बोलो नो सर. सर. No, sir. बहुत बढ़िया. No, sir. ओके सर, तो इसका मतलब है कि बाय रिजॉल्विंग दिस फोर्स आई विल गेट द टू कंपोनेंट्स. मैं यहां पे शो कर देता हूं f cos 60. cos 60 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो आई कैन राइट दिस एज f/2. और sin 60 इज √3/2. तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे बेटा, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 f. मतलब इसके दो कंपोनेंट आ गए. देखो 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 देखो, ये आ गया √3/2 f. और ये सर कितना आ गया सर? ये आ गया f/2. सर नहीं आया, सर नहीं आया, नहीं आया. समझ आया नहीं आया? आ गया, sir. आ गया सर. आ गया, sir. आ गया. चलो दूसरे पे चलते हैं सर. सर ये वाला, ये फोर्स देखो, इसका भी एंगल y पे 60 है. सर मुझे आप लोग बताओ, व्हाट विल बी द y कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स? y पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या लिखूं मैं? जल्दी जल्दी बोलो. f cos थीटा. Cos. f cos और इस पे 60. जो f sin f 60, sin तो 60. है ना, तो cos 60 की वैल्यू फिर से मैं कह सकता हूं कि f/2, मतलब ये f/2. और यहां पर क्या आ गया बेटा? यहां पर आ गया √3 f/2. ठीक है. इसका मतलब आप पूरी कहानी को देखिए, अब पूरी कहानी को देखिए. अब मैं इसको एक बार और आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, बट आपको ये सारी बातें याद रखनी है. भले मैं इसको बार बार ब्रेक करके समझाता हूं, बट आपको समझने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, एक एक स्टेप ज्यादा करके बता रहा हूं. बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज रिजल्ट जो मैं कर रहा हूं. ठीक है. देखो यहां पर आपको दो फोर्सेस आए, f/2 एंड दिस इज f/2. नीचे एक फोर्स है जो मैं लिखना भूल गया था, ये f. यहाँ पे एक फोर्स मिला √3/2f, और यहाँ पर एक फोर्स मिला √3a/2f. मुझे सिर्फ टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट of the forces in the horizontal direction. What will be the result of this? 0. Very good. Zero. ठीक है. Obviously 0. Why? Because this is equal to this force and both are in the They're opposite opposite direction. direction. है ना? तो F net in the horizontal direction, undoubtedly it is 0. And what about y direction? तो देखो, It would be these 0 two, also. it would be 0 also, because this f/2 and f/2 are in the same direction. So 2 this plus. will become f, and this will Yes. be here f in the opposite direction. This is f net is along y axis is also 0. This means that whole force will be equal to 0 or not. Yes, sir. This is the other way of thinking the same problem. भाई वेक्टर का सम करने का एक और मेथड है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज रिजोल्यूशन मेथड. यू हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स. और आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पहला मेथड बताया है, टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, या आप ऐसे कर सकते हो. इट इज योर चॉइस. बट एज अ टीचर मैं आपको ये कहूंगा कि व्हेनेवर यू हैव मोर देन टू वेक्टर्स, अप्लाई दिस मेथड व्हिच इज द रिजोल्यूशन मेथड. ठीक है. It will be quite easier for you to apply when you have more than two forces. Clear? Note कर लो. Yes, sir. आगे बताता हूं. कर लिया? Yes, sir. सर एक बार सारे बच्चे बोलेंगे, सर नोट कर लिया? यस और नो? Yes, sir. ओके गुड. Yes, sir. ओके. अब देखो, एक और मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं.
वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। तो चलो कोई भी नाम हो, उससे हमें क्या करना, क्वेश्चन समझे आप। देखो आपको ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा कि मान लो लेट्स से वी आर हैविंग टू चार्जेस, लेट्स से वी आर हैविंग Q1 एंड Q2 एंड दे हैव बीन सेपरेटेड बाय अ लाइन, और इसकी कुछ डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस, लेट दैट बी डी आर और व्हाटएवर। आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन कैसे बोला जाएगा, मेरी बात सुने। आपसे बोला जाएगा वेयर शुड आई प्लेस द थर्ड चार्ज along this line joining two charges। मतलब ये जो लाइन है जिसपे ये दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2, इस लाइन पे मैं थर्ड चार्ज कहां पे रखूं so that the net force on the third charge is zero। Did you understand what did I say just now? On this line joining Q1 and Q2, where should I place the third charge at which the net force is equal to zero? समझ रहे हो आप? Yes, sir. कहां पे रखूं सर? यहां रखूं, यहां Cent- रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं? नहीं, सेंटर नहीं कह सकते। सर मैग्नीट्यूड क्या उसी होगा सर बोथ चार्जेस का? उस पे डिपेंड करेगा। अभी तो मैं Yes, एक sir, आपको सिर्फ exactly. है ना, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक मेथड सिखा रहा हूं कि हाउ यू विल डील विद दिस। ठीक है, तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो बिहाइंड दिस क्वेश्चन, उसके बाद आई विल टेल यू डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद हम डील करेंगे। तो यहां पर मेरी बात समझे कि अब इसमें थर्ड चार्ज, तो मेरे को एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक बॉडी है और मैं आपसे कहूं कि इस पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2, और मैं आपसे कहता हूं कि नेट फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए, द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज जीरो। मतलब ये फोर्स लग रहे हैं बट मैं आपसे कह रहा हूं कि नेट इज जीरो, तो व्हाट विल इट मीन कि F1 और F2 का रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ F1 एंड F2? Both the forces are equal in They are magnitude. equal. ऑफ कोर्स दे आर इक्वल। सिमिलरली अगर मान लो बच्चे आपने एक चार्ज लिया Q1 और आपने एक चार्ज लिया Q2, अगर आप थर्ड चार्ज कहीं पर भी रखो, लेट से मैंने मान लिया यहां पर रखा मैंने थर्ड चार्ज Q, तो अनडाउटेडली इस थर्ड चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे? एक Q1 लगा रहा होगा और एक Q2 भी लगा रहा होगा। नहीं आ रहा सर, समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं चाहता हूं कि इस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो, तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज ड्यू टू Q1 and due to Q2 must be equal and opposite। Is it clear? भाई अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि इस पे थर्ड चार्ज पे फोर्स तो लग रहे हैं बट उस फोर्स का सम मुझे जीरो चाहिए, तो ये तो तभी हो सकता है ना कि जब दोनों फोर्सेस इक्वल भी हो और ऑपोजिट भी हो। Exactly. नहीं आ रही बात? Yes, sir. क्लियर? तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन, ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या चेक करेंगे कि ये थर्ड चार्ज पे कहां पर फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, एट विच पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज ऑपोजिट, इन विच रीजन। पहले तो ये चेक कर लिया करो, डिस्टेंस तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ये चेक कर लिया करो कि एट विच इन विच रीजन द फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज आर ऑपोजिट। पहले तो ये चेक किया करो, क्लियर है, किस रीजन में फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज ऑपोजिट। जैसे मैं एग्जांपल्स लेता हूं, अगर मान लो मैं ले लूं एक चार्ज Q1 और एक Q2, मुझे बता सकते हो इस लाइन पे कहां पर, मतलब यहां पर इन बिटवीन द टू चार्जेस या आउटसाइड द टू चार्जेस, कहां पर थर्ड चार्ज पे नेट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी फोर्सेस की? तो इमेजिन करो कि अगर मैं ये चार्ज Q को यहां पे रख दूं, तो आपको नहीं लगता Q1 विल बी रिपेलिंग दिस Q टुवर्ड्स राइट? सर सोच के बताओ, ये Q1 इस Q को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? और रिपेल करेगा तो Yes. राइट की डायरेक्शन में करेगा या नहीं? Sir. सर आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन, प्लीज Yes, sir. रिस्पॉन्ड। ऑब्वियसली Q1 विल रिपेल दिस Q टुवर्ड्स राइट, तो Q2 क्या करेगा? Q2 विल रिपेल दिस Q टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना? मान लो ये F1 है, ये F2 है, तो क्या डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई या नहीं हो गई? Yes. Yes, sir. है ना? Yes. इसका मतलब इस केस में हम चार्जेस को, थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे? इन बिटवीन। कहां पे रखेंगे? इन बिटवीन। समझ में आई बात? In between. अच्छा, ये एक केस है। अगर मान लो इसी में मैं एक बार और कंडीशन लगाता हूं कि मान लो मैं आपसे कहूं कि ये चार्ज है Q1 एंड दिस इज माइनस Q2। अब मुझसे बोला गया थर्ड चार्ज को कहां पे रखो, तो पहले डायरेक्शन ऑपोजिट कहां पर होगी, चलो देखते हैं। अगर इस केस में मैंने थर्ड चार्ज को यहां पर रख दिया,
तो Q1 इसको रिपेल करेगा, बट Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, तो ये sir. फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आई या सेम आ गई? Same. सेम आ गई। तो अगर ये फोर्स की डायरेक्शन सेम आ गई तो ये सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, ये रिजल्ट 0 तो नहीं आ सकता ना। इसका मतलब है कि हम इस केस में अगर वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव तो थर्ड चार्ज को इन बिटवीन तो नहीं रखेंगे। चलो तो फिर कहां रख सकते हैं, चलो देखते हैं। तो थर्ड चार्ज को हम इस केस में कहां रख सकते हैं, चलो देखते हैं। इन बिटवीन तो नहीं रख सकते, ये Q1 है, ये Q2 है। तो थर्ड चार्ज को इस केस में हम आउटसाइड रख के देखते हैं, यहां पर। ठीक है, क्लियर है Yes. Yes, सर? sir. Yes, sir. तो ये Q2 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। Q2 अट्रैक्ट करेगा और Q1 क्या करेगा इसको, तो Q1 इस Q को रिपेल करेगा। समझ आ रही बात? सोच के देखो, Yes, sir. ये Q1 इस Q को रिपेल करेगा और ये Q2 इस Q को अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो गई या नहीं हो गई? Yes. Yes, sir. इसका मतलब अगर आउट ऑफ टू चार्जेस वन इज नेगेटिव तो थर्ड चार्ज विल बी प्लेस्ड आउटसाइड, एंड आउट ऑफ टू चार्जेस बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव भी होते तब भी यही होता। फिर से सुन लो, इफ द टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस तो थर्ड चार्ज विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन फॉर द नेट फोर्स टू बिकम 0, एंड इफ द टू चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस तो थर्ड चार्ज वुड बी प्लेस्ड आउटसाइड फॉर द नेट फोर्स टू बिकम 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर एक बार और हाँ ना बोल दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर it is the case of like charges तो third charge will place in between. If it is the case of unlike charges तो third charge will be placed outside, right? तो सर क्या ये थर्ड चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करता कि उसको कहां पे रखेंगे? नहीं, थर्ड चार्ज के साइन पे ये डिपेंड नहीं करता। थर्ड चार्ज के साइन पे ये डिपेंड नहीं करता। सर क्लियर हो गया Sir. एवरीवन? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो आज यहीं तक रखो एंड यू विल रिमेंबर दिस सो दैट कि हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करें। Okay, sir. ठीक है, Thank ओके। you, sir. Thank you.